नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन ड्रॉप्स बाय गीत। जहां हम सिर्फ सफलता महसूस करते हैं, आज उन्हीं चीज को देखते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ रही है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ क्राउन से नहीं बल्कि करेज से शाइन करती है। इनका जो सफ़र है वो आप कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट ओनली एन एक्ट्रेस और डांसर या लीगल प्रोफेशनल, ये सब तो बाद में है। सबसे पहले शी इज़ अ वेरी सोलफुल ह्यूमन बीइंग। आइए आज मिलते हैं मिस अमृत कौर ढिल्लों से। नमस्ते। Namaste. हाउज यू अमृत? I'm very good, thank you. How are you? Great. It's such a pleasure to see you, meet you, as I know you personally. मैं आपको इतना डीपली जानती हूँ कि मैं आपको इसीलिए कॉन्वर्सेशन के लिए आज आपको बुलाया है, जहाँ मेरे व्यूअर्स, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो आपको आपकी ब्यूटी, आपके सारे टैलेंट, आपकी इतनी ब्यूटीफुल जर्नी जो हुई है आज तक के सफ़र में, उसको फील कर सकते हैं। एंड प्लस आपकी गाइडेंस will definitely help them. Thank you so much. First of all, I'm really glad to be here. Thank you for inviting me. It's a pleasure to actually share the screen with you. As you yourself, you're a dancer, you are an artist. You've been very humble about it, but just like how you said, you really know me well. Similarly, it's really a pleasure to have a conversation with a beautiful soul like you as well. And thank you for the beautiful introduction. It was the best one ever I've had. Thank you so much, Amrit. Let's start with it. Amrit, you have I would say many personalities. But as I know you, right now you have done your law also and you are also in an entertainment field. Yeah. आप ये दोनों का बैलेंस कैसे कर लेते हो? लॉ बोले तो एकदम ही टोटली डिफरेंट, एंड देन अगेन इन दिस एंटरटेनमेंट फील्ड। टेल मी, हाउ डू यू डू दिस? So, अगर दूर से देखें तो obviously these are two different fields, but I have somehow found my a bridge bit in between. I found my middle point in it. So जो मेरा legal काम है वो भी इसी industry में है. So I am an entertainment lawyer. Okay. So, इसी इंडस्ट्री में मेरा लीगल का काम भी चलता है एंड यू नो So you are an entertainment lawyer. Yes. So that is a plus point. I mean, I think सब लोग ने ये नोट करना चाहिए. People are somewhere criminal, people are somewhere some property. There's too many things, and you are into entertainment. Yes. Because that connection is there with entertainment. Yeah. Oh, right? So initially, obviously, like you said, these are two different fields, and manage इसको कैसे करना है? I mean, I've never really thought of how to manage it. मैं बस अपनी journey में लगी हुई हूँ पिछले I don't know since how long, but then there was a day where you know it came to a point where I started thinking, what can I do? How can I actually make use of my academic qualification and find a balance in what I'm doing? And then things just happened, and then I chose to chose this field to. I mean, I chose entertainment law for my legal profession, and so that I am still connected to the same industry. So the balancing to abhi bhi, I can't say that I can manage it that easily. You just have to do it. When you're doing too many things, when you're doing a lot of things in life, somewhere थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, but you got to just keep doing it. So Amrit, if as you said, too many things comes one by after the other. Yeah. And since you have come from a different field, your parents and everybody, they are not from this field, right? You have jumped into this. Struggle must have been very, very tough. Anybody who's coming as a newcomer, whether it's, I would say, as nepotism going on, as thing in film industry, too many things are going on. उसके बीच में अपने आप को शाइन करना. How was your struggle? आपकी जो बिगनिंग है, right from beginning as a childhood you thought कि मैं ऐसे इस फील्ड में जाऊंगी, whether law or entertainment?
How it was? सो बचपन से मुझे घर में वकीलनी बोलकर बहुत चिढ़ाते थे. Okay, सारे family members and Yeah, everybody. I don't know if it was because I was very talkative. बट मुझे गुस्सा बहुत आता था ये वर्ड से कि मुझे लाइक वकील नहीं बनना है. I don't know how it just happened. One fine day when I decided to, go for my further studies and करने कुछ और जा रही थी, but then I discovered that this is legal studies. मुझे बहुत interesting लगी. But coming back to your question that being an artist, being an actor, क्या ये बचपन से था? Very Malaysia से कोई Malaysian Punjabi, you rare, it's not very common thing that you hear. बट कहीं ना कहीं शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था, क्योंकि मैं बचपन से ही शीशे के सामने खड़ी होकर एक्टिंग करती थी. जो भी नई फिल्में आती थी, जो भी हिट सॉन्ग होते थे वो फिल्म के, बस वो रेडियो पे चलते थे. और आई यूज्ड टू बी किस एक्टर या एक्ट्रेस को ज्यादा देखते थे जो आपको लगता है कि यस मैं भी यही बनना चाहती हूँ ऐसे? मैं भी यही बनना चाहती हूँ. ये थॉट तो शायद नहीं आया, बट there was some sort of very natural connection with some actress. कोई स्पेसिफिक एक्टर्स थे जो मलेशिया में बहुत फेमस थे, उनकी फिल्में बहुत लगती थी मलेशिया में, जैसे शाहरुख खान हो गए, काजोल, माधुरी दीक्षित. ओ माय गॉड, आई जस्ट लव्ड हर एक्सप्रेशंस. तो जब भी मैं इन एक्टर्स को टीवी पे देखती थी, एक नेचुरल कनेक्शन बिल्ड होता था कि आई वुड जस्ट एब्जॉर्ब their expressions, and I would actually go in front of the mirror and just imitate them. So good. and I would actually imagine myself in front of a camera. It's really funny. Bachpan mein I used to have this imagination that Shah Rukh Khan is my friend, Juhi Chawla is my friend. I was what, 7 years old, but ऐसे thoughts दिमाग में आते थे. Obviously when you grow up, तब तो आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो इन बातों को. आप सोचते हो कि you're a kid, so बचपन में आप कुछ भी सोचते हो. हाँ, लाइक ऐसा होता है कि अपने जो भी जिनको हम बहुत एडमायर करते हैं, यू फील यस आई नो हिम समवेयर, दे आर कनेक्टेड विथ मी. यस, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. Absolutely. So I had no plans of going into this industry. It just happened. One thing led to another, and then I connected back to my childhood. That okay, it's a calling. I need to take steps further. सो जैसे मलेशिया से मुंबई का सफ़र, you are been born and brought up over there in Yes. Malaysia, and then when coming back to Mumbai, I mean वो जो आपका एक phase होगा, Yeah. I want you to just elaborate and let us know कि कैसा रहा Malaysian girl coming to India in Mumbai and setting up everything on her own, which is not so easy. And not only you, there are many other girls, many men, I would say, the gents also, the whoever has come, like maybe from Canada, maybe from any other countries who are the Singapore and all, they've come here, they've done a lot of hard work. And that journey of yours, how it was, how did you connected with people, who were your first people, I would say, the people who or do their auditions and take your things, like how does it goes about it? So when I first decided to move here, like you said, बहुत सारी countries से लोग आते हैं. Right. But जो countries आपने mention की है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो so there were footprints for others to follow. Right. Malaysia से Someone has taken the lead, and then people are ready for it to take that. yeah, but as for me, there were no footprints for me to follow. Malaysia, yes. कि कहाँ क्या हो रहा है, किधर जाना है, I had zero clue. So when I was a student in the UK, तो वहाँ पे काफ़ी सारी फिल्में शूट होती थी, and I had some opportunities to be a part of those films. And कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन समझ में आती थी कि ओके, this is the place, अंधेरी में ये होता है and all that. So with very minor, very basic knowledge, I actually took a leap of faith that okay, I'm actually going to go to Mumbai and explore how it is. However, the first year when I was trying to come here, because there were no footprints, even my parents were a little concerned.
वो पहला साल तो प्लानिंग में ही चला गया, एंड नोइंग लिटरली नोबडी. आई हैड सम यूनी फ्रेंड्स जो यहाँ के हैं, लेकिन वो भी मुंबई में नहीं थे. इंडस्ट्री में तो मैं किसी को नहीं जानती थी, लाइक पर्सनली इतने कोई क्लोज फ्रेंड्स थे नहीं. But thankfully, a year later, I actually got an offer to work in a Bollywood film, and it was a big banner film. That is how I first came to Mumbai. And I landed here, did my shooting, and then तब मैंने वो 10 दिन में थोड़ी बहुत रिसर्च की कि कहाँ पे रहना होता है, कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट फिल्म वहाँ पे कुछ थोड़े बहुत दोस्त बने. दोस्त भी नहीं कह सकते, पर थोड़ी बहुत पहचान हुई और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली. तो मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके एक एक कदम आगे बढ़ाती रही, एंड देन आई डिसाइडेड टू मूव हियर. अमृत, जैसे कहा आपने ये जर्नी आपकी इस टाइप की रही, जब आपको फर्स्ट फिल्म मिली, इट मस्ट हैव बीन समथिंग रियली वंडरफुल बिकॉज यू हैव टेस्टेड. अब ऐसा लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है, या आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए? क्या डेंजर, सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, यंग गर्ल कमिंग टू दिस प्लेस, दो इट्स सेफ, Mumbai is compared to any other states, I would say it is, but still एक fear, somebody, एक कोई मेरे साथ होना चाहिए था, some gents, a lady or whoever you feel it, your parent. तो उस टाइम पे ऐसा कुछ लगा कि यार कई बार तो आप टूट चुके होंगे, लाइक ये नहीं मुझे इसने धोखा दे दिया या मेरे साथ ऐसा हो गया, कहीं ना कुछ ऐसा होता है, मेरा बैनर मुझसे छीना गया है या मेरा रोल मुझसे छीना गया. यू मस्ट हैव बीन फेल्ट लाइक दिस. तो ऐसी सिचुएशन में वेयर यू हैड गॉन, लाइक हु वाज देयर टू really take care of you, like, or maybe something what you wanted to do और वो नहीं हो पाया, तब वो टूटने के बाद आप कैसे उठे हो? सो जब मैं जब पहली बार मुंबई आई जी. ड्यू टू दैट फिल्म, उसके पहले से ही बहुत लोगों ने डिस्करेज किया. इतने लोगों ने इतना स्ट्रांगली डिस्करेज किया कि कोई भी गिव अप कर देता. बट देन you know, when you really want something or you really pray for something, I don't know if it was manifestation or my father's prayer, because my father used to actually, my father told me कि रुक जा, यहाँ बैठकर कुछ कर, तुम्हें वहाँ से ऑफर आएगा. It actually happened. Sometimes it's your parents' prayers, blessings, or वो miracle थी या क्या था, I don't know. But बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने रास्ते में रुकावटें भी डाली. But I guess naturally I'm very strong Punjabi girl who will never give up. Yeah, I don't think I know how to give up. I think now I've realized कि वो give up वाला नेचर तो नहीं है मेरा, लेकिन गिव अप कैसे करते हैं I don't know. माहौल तो ऐसे काफी बन गए होंगे कि यस अमृत, पैक योर बैग एंड नाउ मूव ऑन, बट स्ट्रॉन्ग लेडी. लाइक ऐसे वो गिव अप करना नहीं आता, एक बार ठान लिया तो ठान लिया, ये करना है. It's one way journey, it's do or die situation. पीछे मुड़ के नहीं देखना है. So when I actually got this movie, that gave me a boost कि नहीं, Yes. ये हो सकता है. So मैं जब जाकर वापस आई, I took a step that okay, I'm going to come here and do what needs to be done. So the actual challenge starts when I move here. Now it's a competition. Now you are in that, Yeah. you know, you cannot go back now. Yeah. You have to do something. Yes. So it doesn't जो दिखाई देता है कि चलो रोल आया, casting call, audition दो, you guys selected, you get into the film set. ऐसा नहीं होता है actually. A lot of times बहुत नाइंसाफियाँ होती है. I've seen things happening in front of my eyes. Yes, it can get very difficult, very disappointing. स्पेशली जब आप बाहर से आते हो, आप इस इंडस्ट्री में आपका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है या कोई रिश्तेदार नहीं है, एंड फैमिली भी दूर है. दे से इट कैन बी वेरी लोनली व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो फर्दर अप इन लाइफ. बट उसके पहले वो जर्नी में कितनी बार हम अकेला फील करते हैं. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स हैव बीन देयर when I reach out. A lot of times I don't reach out, I just keep it to myself, and it's a conversation between me and God. And like I go to Gurdwara,
I used to go almost every day, but अभी नहीं उतना जा पाती हूँ. It's always a conversation between me and God. So nice. I mean, because you must have seen there is a teamwork always in film industry or any industry now. Basically, more film industry में जैसा देखा जाए, अगर आपकी एक टीम स्ट्रांग है, then मलाई जैसे सारे काम हो जाते हैं. नहीं, अगर आपका एक भी बंदा सही है, फिर कहाँ से कहाँ आपके रोल्स कट हो जाते हैं. सो यही चीज है. जैसे सब लोगों ने आपके क्राउन को बहुत देखा, मिस मलेशिया अमृत कौर ढिल्लोन. उस क्राउन को तो वाह अमृत आपने क्या कर दिया, आपने क्या बना दिया, एंड एवरीबडी अट्रैक्ट्स कि वो क्राउन. लेकिन उस क्राउन का वेट कितनों ने देखा है? आई वांट टू नो दैट आल्सो. रियली किन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया है कि यस, अमृत का वो क्राउन का वेट बहुत है. Um, I don't think so. Many people know about that journey Yes. of mine. Um, it's sorry. I have touched you. Amrit. Please, no problem. I know it. I've touched your point. Have a sip of water, Amrit. So sorry. No problem, Amrit. Take your time. कहीं मैंने आपकी एकदम राइट नस को पकड़ लिया है. Um, no one has actually asked me. आई मीन आई नो कि आज जो भी उस लेवल, वेदर इट इज ऐश्वर्या राय जी या सुष्मिता सेन जी, आई नो व्हाट स्ट्रगल दे हैव गॉन थ्रू. और वो जो हार्ड वर्क एक लड़की अकेले करती है उसका एक, इसलिए मैंने जब अमृत को देखा कि वो उसका क्राउन, यस शी इज, पीपल आर अट्रैक्टेड फॉर एवरीथिंग, बट उसका वेट किसने किसने जाना है. आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. Um, when I began my journey in pageantry, again there were no footprints for me to follow. मैंने जो प्रीवियस विनर्स थे, मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया ऑन फेसबुक कि कहीं से कुछ तो समझ में आए हाउ थिंग्स हैपन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स शायद लोग बिजी होंगे अपनी लाइफ में. there was only one girl who actually two girls who actually replied, and both of them were former Miss Malaysias, and उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस दी और वहाँ से मुझे थोड़े बेसिक समझ में आए. But I literally had to train myself for everything. And the first time when I went for it, मैं तब स्टूडेंट थी, लॉ की पढ़ाई कर रही थी, जॉब भी कर रही थी. सो जॉब करना, पढ़ाई करना और फिर पैजेंट के लिए प्रिपेयर करना, it was definitely not easy. Even for the second time, I was working. I was also in between handling my dad's business and then preparing myself for it. तब तो एक एक्सपीरियंस हो चुका था. But apart from जो जो आपकी प्रेपरेशन होती है, उसके अलावा you have to be mentally and emotionally very strong. And that's where आपके जो अपने होते हैं, when you have that kind of support, it does give you a boost. But me being the person I am, I don't really share what goes on inside. So the main battle was within rather than outside. So like I said, I'm always in conversation with God. तो मुझे ऊपर से बहुत हिम्मत मिलती थी, बहुत I used, every time there's a conflict, every time I see something wrong happening in that journey or in the competition, because इन चीज़ों में भी बहुत नाइंसाफ़ी होती है, फेवरेटिज्म होती है, and I guess it was only God who kept giving me strength. So let's come to this, Amrit.
इन सब चीज़ों में आप जितनी बार ब्रेक हुए, आपने यू हैड वन, यू हैड गॉट ऑल व्हाट यू वांटेड, वो क्राउन आपको मिल भी गया, आपके साथ आपके ऊपर वाले ने भी पूरा साथ दिया। बट यस, दुनिया जो हमारा एनवायरनमेंट है, एज एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन रोल, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। जब आप उस फील्ड से स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, जहाँ यू स्टार्टेड कनेक्टिंग विद गॉड, नाउ यू डोंट थिंक कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आई कैन हैंडल माई थिंग बिकॉज ही इज़ देयर, राइट? आई मीन इस इन बीच में आपकी कई बार आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो गए, बिकॉज इट वॉज एज यू सेड, आई डोंट शेयर इट, मैं नहीं, क्योंकि नोबडी इज देयर होम टू ट्रस्ट। कहीं पर आपने उसके अंदर दबा दबा के अंदर ही आपने अपने वो जख्म क्रिएट कर दिए। उस जख्म को आपको एक ही बंदे ने निकाला है, वो है आपके वाहिगुरु जी। एंड इस स्पिरिचुअल फील्ड में आप कैसे आ गए? मतलब आप ऑलरेडी इस एंटरटेनमेंट के काफ़ी ब्रेक का है, काफ़ी दुख मिलने के बाद, एंड नाउ यू हैव बिकम अ हीलर ऑल्सो। समटाइम आई रियली डोंट नो, बट जो चीज़ मुझे पता चली है, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे। हाउ डिड दिस हैपन कि चेंजिंग योर सेल्फ, द ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे आया? वेदर इट इज़ योर हेल्थ, whether it is your right type of eating food, whether with God, what it is like. So I've been very close to, excuse me, बचपन से ही I've been very close to spirituality. Obviously वो method जो होते हैं meditation and all, उसकी तो awareness थी नहीं, लेकिन एक connection with God has always been there, and it grew with me. So as I was growing up, I got into meditation. Things just happened very naturally. Spirituality में बॉम्बे आने के बाद, सॉरी, बॉम्बे से पहले ही I started feeling this pull towards spirituality even more. It was very natural. It was right from Malaysia time. I mean, जब आप मलेशिया वहाँ से ही आपको ऐसे फीलिंग था, या मुंबई में आके ज़्यादा ये होने लगा? मुंबई में आके obviously there was a boost. I've been intuitive since I was a kid. Okay. But I wasn't aware of intuition. How to go the right way? What was the correct method of it? And I believe when you go through tough times, there are hidden gifts that you need to decode. And that only happens when you find silence in the noise. Bombay I did. How beautifully you said it, those hidden gifts. Yeah. And it is there for everyone. For everyone. And if we keep focusing on that problem, then we may not realize those gifts. Sometimes some patterns repeat in our lives. कोई problems होंगे या कुछ certain experiences keep repeating. वो इसीलिए repeat हो रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने या तो वो lesson नहीं सीखा है, या वो जो एक gift है आपके लिए, आपने अभी तक उसको पहचाना नहीं, decode नहीं किया. After coming to Bombay, a lot of good things happened. I wouldn't say I'm vegetarian, but धीरे धीरे दूर होने लग गई मीट से. ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से आवाज आने लगी कि अंदर बस. से. I'm so glad I don't eat chicken anymore. मेरे घर में यहाँ पे मीट कुक भी नहीं होता है, and I started feeling a lot more light, a lot more lighter. And the best thing that has ever happened to me is detachment. I think we have spoken about it. This was my Yes. biggest problem. Yes. There are these 5 things in Sikhism that we speak about: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. I had the 4 in place, but there was this one thing, attachment. I didn't know the middle point of it. I didn't know how to overcome this. I am an emotional person, and I do get attached to my people. And you know how it is when you're I know attached. it. Yes, I know it very well, and how we had that discussion Yes, also. yeah. And I think there it clicked. Yeah, Yes. but I remember asking you, but how? It's so difficult. Like, I don't know the way. How do you get detached? And probably this was the biggest gift that I needed to decode, and I have finally. It's the best thing that has ever happened to me, and it freed me. I feel so free. So light. I'm more focused, Yes. towards my goals. I'm detached even with in my creative field. पहले वो एक attachment होती थी कि disappointment होती थी, अरे
ये नहीं हुआ, things अब didn't मैंने work my फर्क ही way. नहीं पैंदा और फर्क ही नहीं पैंदा. I'm like, और कोई नहीं. हाँ जी कोई नहीं आगे देखेंगे Okay, जो what's next? नेक्स्ट इज देयर Yeah. दैट इज ट्रू So I guess it also saves a lot of time. Instead of sitting and cribbing, this didn't happen, we move ahead. Okay, what's next? so beautifully you explained this part detachment and focusing on your own this thing. Yes, definitely you have to be a guide, you have to help everyone, whoever comes to meet you, whoever needs you, but don't get attached to it so that you are at peace. Yes. जिसको ज़रूरत है मिलेंगे, जिसको नहीं है तो भी नासिक, तू भी खुश मैं भी खुश. Let's go into deep about this your Punjab ka. What connection do you feel it ki still that is not coming out of it? You were in Malaysia, such a modern girl. Punjab का connection आज भी क्या चीजों में है आपके लिए? I guess like how they say you can get Punjabis out of Punjab, but not Punjab out of Punjabis. very true. Even if you're born in a different country. So my ancestors are from Punjab. और Okay. कितनी 3-4 पीढ़ियों से अभी कहाँ मलेशिया में पंजाब हैं. में कहाँ से? So actually Lahore se. Okay. Obviously now it's Separated, separated. yeah. But yeah, my father's side they were from Lahore. Okay. And I guess my mom's side they were from this side of Punjab, the India Okay. side. And बचपन से ही बहुत कल्चर से जुड़े हुए हैं. So and Punjabi culture is so colorful, so loud. इतनी रौनक से भरा हुआ कल्चर है. It's just there. It's a connection. I don't think it will ever go. And I'm really proud to be a Punjabi. So good, so good. So let's connect to a different part of it, of our podcast. Let's do a rapid fire round. And let me see whatever you feel it. आप जितनी फटाफट जो आपके दिमाग में on the spot आता है आप बताइए. Let's start with it. Okay, Amrit? Okay. So confidence in one word. Confidence itself. Oh my God, very good. Bollywood या Hollywood? Both. Sky is the limit. Sky is the limit. Heels या barefoot dance? Oh, difficult to choose though. I've both. Both. Okay. Okay, heels first. And जब थक जाओ तो डांस नहीं रुकना चाहिए. Heels को निकाल दो. Heels टूट जाए गिर जाए but सब डांस चलती चलेगा, रहना डांस चाहिए. चलते Okay. रहना चाहिए. Crown या calm? Both have their own. You can elaborate this like crown या calmness, how it goes about it. I can't pick one. Calmness is every day. Okay. It's something that the stillness, the calmness, it needs to be there. The inner peace is very important. But crown was something I worked hard for and I got it. So A both. dream come true. A dream come true. Morning mantra? Vaheguru. अगर लाइफ सपोज आपको एक और क्राउन देना चाहती है. Sorry, can I? repeat Yes, that yes, morning please. mantra? Yes, yes. So I actually say this the very moment I open my eyes. Vaheguru Tera Shukar hai. I start with gratitude, and it's been since I was since my teenage days. आँख खुलते ही वाहिगुरु तेरा शुक्र है. And then I शुक्राना. start my day. Yeah, That's good. So अगर लाइफ एक और क्राउन आपको देना चाहती है, मिस मलेशिया तो दे चुकी है, अगर कुछ और देना चाहती है, what would you like it? I- I would like to represent those girls or those people who have dreams and they don't know their way towards their dreams. And if I can be a small example of resilience, not giving up, and not limiting yourself. So if I were to be crowned again, it probably for my resilience, I would say. So good. Now, let's come back to this. Like, if you say the new generation, like people now, again, they want to follow your footstep. As you said, somebody had done it, and now you are in mid.
Now the next generation is also ready for it. Maybe for different way, or Miss Malaysia, Miss India, or maybe in entertainment field and all. What would be the feedback, or what would be the guidance would you like to give it? I would strongly recommend to be mentally very strong. I would. What we see on screen is not the only thing. There's a lot of hard work that goes behind. A lot of people would walk out of your life, and in between, you might feel like you'll be disappointed, and you might feel like, am I doing the right thing? Or should I stop? You can take a pause, but don't stop. So being mentally very strong, I would say, would be the thing, and normalize taking therapies. People don't speak about therapy. People shy away, run away from uh, the topics of mental health, emotional health, and people live in denial. They may be going through a storm within, and they're like, "Oh no, I'm fine. Oh, everything is good. Oh, I'm strong." Being uh, strong doesn't mean denying the fact what the storm that's going on inside. So normalizing therapy and being an artist, if first of all recognize who you are from within. Once you know who you are, nobody can shake you. I think this is one thing that I managed to achieve at the very beginning stage when I entered in this industry. I got to know who I am. So when people used to say, okay, you're this, you're not this, I would know, no. I know I can do this. There would be You a lot have of people to be discouraging me. very alert and calm, and to understand what the opposite person is saying about you. Yeah. And then you have to work on it rather than just taking it, यार उसने मुझे ये कह दिया मैं ऐसी हूँ, Yeah. पर शायद मैं ऐसी नहीं हूँ. Yeah, people would sweep you off very easily if you're not strong and firm, if you don't know yourself well. And I believe spirituality brings a lot of grounding. If you're grounded, if you find that silence in that noise, आपको कोई आसानी से हिला नहीं सकता है. तो ये जो थेरेपीज का जो आप बात कर रही हैं, मे बी मेनी आर्टिस्ट मस्ट बी फेसिंग इट, Yeah. artists or any directors, singers, whoever it is there. So what type of therapies would, like, as you must have gone through this and you have done it, what type of therapies you are talking about? Like, So being an artist, artist normal जो आर्टिस्ट होते हैं वो बाकियों से थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनर्जेटिकली इमोशनली इन एनी वेज एंड हमारा जो काम है इट हैज़ गॉट अ लॉट टू डू विद इमोशंस and we live in a world full of emotions, expressions, and then we have this other world, the outside world. We generate a lot more emotions than others. What happens is it's not easy to understand an artist. First of all, we see a lot of disappointments, a lot of uncertainty that's there. And जब आपका कुछ काम नहीं होता है for the longest time, you tend to doubt yourself. And here is where therapy would help you to keep your sanity intact. Therapy would help you to refresh your mind. There are many types of therapy. I mean, जो आपको resonate करे, go for that. I would highly recommend hypnotherapy. That has worked very well for me, for so many people that I know. It actually, it flushes out a lot of things from your subconscious mind. I highly recommend sound healing, sound bathing. It also does a lot of good thing to your body, to your mind. It relaxes you. So I speak a lot about therapy to people because आप कितना एब्जॉर्ब करते हो उसको निकालना भी होता है. बहुत सारे एनर्जेटिकली डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So there are a lot of therapies available out there, but each to their own. yes, depends कि Yeah. कैसे किसका कैसे है. Like एक आर्टिस्ट के लिए अमृत, there are different moods, different, I mean एक zone है. Sometimes we are very stressed out, sometimes we are very low. बट मेरा पार्ट, मेरी जो एक्टिंग पार्ट है या मेरा जो रोल करना या डांस भी है, उस समय आई हैव टू बी ऑन फुल ऑन 100% देना ही है. ऐसे टाइम पे आप कैसे कर ले? तो समटाइम्स मे बी यू आर नॉट वेल और समटाइम्स
तो उस टाइम पे वो कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं आप? So there have been times where जो एक्सप्रेशन मुझे कैमरे के सामने निकालने हैं, मैं उसके एकदम ऑपोजिट फील कर रही हूँ। Right. जहाँ मुझे हंसना है, मेरा एक्चुअली रोने का मन कर रहा है, या जहाँ मेरा एक रोने वाला सीन है, उस वक्त आई एम हाई ऑन लाइफ, आई एम जस्ट सो हैप्पी। Yeah. सो आई पर्सनली यूजुअली टेक सम टाइम, जब मेरी मेकअप हो जाती है, आई जस्ट रिक्वेस्ट फॉर लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स, आई नीड टू गेट इनटू माय जोन। सो हर एक आर्टिस्ट का अपना जोन होता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई some people get connected back to some memory in the past. Similarly, I get into my zone. Depends on what kind of scene it is. First of all, you need to understand what's required out of you through that scene. Is it the emotion? What kind of emotion it is? So usually मैं अपना एक corner ढूंढती हूँ जहाँ पे कोई नहीं आ सकता है. I don't allow anybody. If I'm in a vanity van, I'll just request everybody to just give me some time, and I need to. You get want into your my me zone. time where you can work on it. Like, Yes, and then when I face the camera, I don't know, some magic happens. सब blur हो जाता है. It's only me and the camera. Camera. I don't know. ऐसा लगता है कि एक पोर्टल खुल गया है, and मैं उसके अंदर चली गई, and ये यहाँ पे सिर्फ मैं और कैमरा है, and मुझे बाकी कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ ना नहीं कुछ दिखता दिखाई है. देता. Some magic happens, and then I'm into that zone, and it just flows. And a lot of times the directors have come back to me and said कि बहुत natural था. So I feel it from within, and for that I just need my space for some time. It's such a beautiful way you have explained each and everything. I mean, मैं क्या टॉपिक पे था और आज अभी लास्ट टॉपिक पर आने तक, अमृत, you have explained it so beautifully. क्राउन तो आपका है ही जिसने आपको ग्लो करता है, बट जो आपका इनर क्राउन है, आई मीन दैट गिव्स अ शाइन ऑन योर फेस. I thank you so much, Amrit, for coming over here and making this podcast so beautifully explained to my viewers. And each and every part, I think मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी थेरेपी, आई मीन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की फील्ड के लिए नहीं, जो भी थेरेपी या जो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको लगता है आपके कोई भी काम की वजह से या कोई घर के प्रेशर की वजह से, और उन चीज़ों को आपको एक सही तरीके से अगर डायग्नोज करना है, then go for it. Don't hide it. Let your parents know about it. Let your friends know about it. Everything just keeping it is not good for yourself. And yes, thank you so much for Amrit for being such a beautiful conversation with us. And I have no words for her except all good blessings, love, prayers for her. Thank you and namaste.